ठीक है, देखो लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 इज P2 बाई P1। तो लैम्डा 1 की वैल्यू दे रखा है, लैम्डा 2 की वैल्यू दे रखा है, मैंने इसको वहां से 1 से माइनस किया तो इसको भी 1 से माइनस करना है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 माइनस 1.00 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 00। ठीक है ना, तो ये वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी बेसिकली, P initial will be getting the answer। इसका कैलकुलेशन कर लो, विल गेट द थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद एनोड पोटेंशियल फॉर ए फोटोसेंसिटिव सरफेस फॉर 3 डिफरेंट रेडिएशंस IA, IB and IC be the intensities, VA, VB, VC are the frequencies of the curves A, B and C respectively। then तो अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है A के लिए, इसके लिए फ्रीक्वेंसी ये है, फ्रीक्वेंसी B, फ्रीक्वेंसी C, देन व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन देम। देखो यहाँ पर सी एंड, अगर मैं इसको देख रहा हूँ ग्राफ को अगर, तो सी एंड बी का इंटेंसिटी कितना है बेटा, सी है ना, इंटेंसिटी ऑफ सी विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ योर बी, इंटेंसिटी ऑफ सी विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ द बी, बी इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू ए, ये नहीं होगा, isn't it? बी इज इक्वल टू सी, ये होने के चांसेस है अपने को। देन उसके बाद क्या दे रखा है, पोटेंशियल्स, पोटेंशियल्स देखो बेटा किसका सेम हो जाएगा, यहाँ पर तो किसी का भी सेम नहीं दिख रहा है यार, फिर तो ग्राफ में VA, VB, VC पूरे डिफरेंट है, यहाँ तो सब कुछ इक्वल इक्वल दे रखा है। IA इज नॉट इक्वल टू IB, VB इज इक्वल टू VC। पर देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ योर C विल बी ग्रेटर देन ऑफ योर फ्रीक्वेंसी ऑफ योर B। हाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ योर ये इज इक्वल टू B कैसा है बेटा, अगर ये दोनों मिलके हैं तो सेम होना चाहिए ना, तो शायद ये दोनों मिलके रहने चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ होगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ योर ये will be equal to frequency of your B। B and C तो सेम नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर ग्राफ पे डिफरेंट है, इंटेंसिटीज तो सेम हो गए, and intensity of A is not equal to intensity of B, A भी करेक्ट है, तो ये ऑप्शन हो जाना चाहिए। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट वन, what is the de Broglie wavelength of alpha particle accelerated through a potential difference of your V। हम लोग बात कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल के लिए, तो अगर हम लोग अल्फा पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं तो क्या कंडीशन आ जाएगा बताइए, 0.287 ये प्रोटॉन के लिए होगा बेटा, दिस वन इज फॉर योर प्रोटॉन एंड दिस वन इज फॉर योर इलेक्ट्रॉन, मैंने इससे पहले लिखवाया था, isn't it? And this one is for your deuteron, this is for your deuteron, so only left out option is D, so this will be the answer for your alpha particle, 1.01 divided by root of your, याद रख लीजिए बेटा। The next one, this is also a good question, try करिए कोई। An electron with rest mass m0, an electron with rest mass m0 moves with a speed of 0.8 c, its mass when it moves with its speed will be equal to your how much। rest mass का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, m is equals to your m0 divided by अंडर रूट ऑफ योर 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर, ये मैंने रनिंग क्लास में भी करवाया था आप लोग को, तो मास विल बी इक्वल टू m0 इज योर रेस्ट मास डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ योर 1 माइनस v की वैल्यू कितनी है 0.8 टाइम्स ऑफ c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरे पास m0 डिवाइडेड बाई c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इट इज 1 माइनस 8 8 64, सो इट इज 0.64। ठीक है ना, so this will be equal to your m0 divided by under root of your 1 minus 0.64 is 0.36। ठीक है, तो रूट ऑफ 36 मतलब 6 आ जाएगा, m0 डिवाइडेड बाय योर 0.6 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 10 टाइम्स ऑफ योर m0 डिवाइडेड बाय 6, यानी this will be equal to 5 times of your m0 divided by 3, थर्ड ऑप्शन। ठीक है ना,
0.6 है बेटा, 6 नहीं है वो। चलिए, lambda E, lambda P and lambda alpha wavelength of electron, wavelength of proton, wavelength of alpha particle are the de Broglie wavelengths of electron, proton and alpha particle. If all are accelerated by same potential, then what is the relation between them? इसी को याद है ये बेसिकली पोटेंशियल में अगर हम लोग वेवलेंथ लिख रहे हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू योर h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ योर 2m इनटू योर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल में लिख सकते हैं, h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ योर 2m इनटू योर पोटेंशियल v इनटू योर q। यानी वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रूट ऑफ योर मास एंड एज वेल एज ऑफ योर चार्ज, अगर दोनों का सेम पोटेंशियल हो गया तो, isn't it? तो एक तो दे रखा है इलेक्ट्रॉन, अनदर रखा है प्रोटॉन। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूं, वेवलेंथ ऑफ योर इलेक्ट्रॉन के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज me, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज e। उसी तरह से वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन के लिए मास विल बी इक्वल टू राइट नाउ फॉर मी द सेम, दैट इज नथिंग बट मास ऑफ प्रोटॉन एंड दिस वन इज चार्ज ऑफ दिस वन। वेवलेंथ ऑफ योर अल्फा पार्टिकल के लिए मास इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ योर इलेक्ट्रॉन। यानी इसके लिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है ना, मास विल बी द मैक्सिमम इसके लिए और चार्ज विल बी इक्वल टू 2e, ठीक है ना। So I can say that wavelength of the electron will be greater than wavelength of the proton and wavelength of the proton will be greater than the wavelength of your alpha particle. Fourth option. चलो, next one. Anode voltage of the photocell is kept fixed. The wavelength of the light falling on a cathode is gradually changed. The plate 1 of the photocell varies with that one how much? Current का relation है ना बेटा, isn't it? So जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी, एनर्जी विल बी E इज इक्वल्स टू hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। अगर वेवलेंथ बढ़ा तो एनर्जी विल बी और डिक्रीजिंग, अगर एनर्जी डिक्रीज हो गई तो इंटेंसिटी विल आल्सो बी डिक्रीजेस। तो इंटेंसिटी के ग्राफ के कंडीशंस में अगर मैं लिख रहा हूँ तो पहले तो वेवलेंथ यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ये नहीं होगा, यहाँ पर भी इंक्रीज हो रही है, ये भी नहीं होगा, ये तो स्टार्टिंग से ये नहीं होगा, ये भी। तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट आउट इज नथिंग बट ऑफ योर 4। स्टार्टिंग में कुछ नहीं रहेगा, थोड़ा कांस्टेंट रहेगा, थोड़ी देर के बाद ये डिक्रीज करने चले जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, photons of energy 6 electron volt are incident on a metal surface whose work function is 4 electron volt. The minimum kinetic energy of the emitted photoelectrons will be equal to your how much? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब कितना हो जाएगा बेटा, क्या बोल रहे हैं पर photon of energy 6 electron volts are incident on a metal surface whose work function is 4 electron volt. The minimum kinetic energy of the emitted photoelectrons will be equal to your how much? C, 2 electron volts. Very good. Maximum kinetic energy का formula कितना? Energy of the photons minus work function, isn't it? यानी this 6 minus of 4, that will be equal to how much for me? 2 electron volts. Energy of the photon minus work function. चलिए, डायरेक्ट याद है ना फॉर्मूला, लिखने की जरूरत नहीं है ना। Maximum kinetic energy will be equal to energy of photon minus work function. ये डाल दो, आंसर आ जाएगा। Next one, the ratio of energy of the photon with lambda is equal to 150 nanometer to that of wavelength of 300 nanometer will be equal to your how much? Ratio of energy पूछ रहा है, तो lambda is equals to your h divided by under root of your 2 into your m into your kinetic energy into your 3। काइनेटिक एनर्जी है ना मतलब 2m into your e, फॉर्मूला अब लिखा है देखो मैंने भी, अंडर रूट ऑफ योर 2m into your kinetic energy, अंडर रूट ऑफ योर 2m into your kinetic energy, ठीक है ना, कर लोगे। द रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन विद वेवलेंथ 150 nanometer and with that one will be equal to how much? यानी lambda is inversely proportional to root of your e, isn't it? So I can write the relation right now for this one in terms of your energy अगर लिख रहा हूँ, lambda 1 divided by lambda 2 is equals to under root of your e2 divided by e1। lambda 1 कितना दे रखा है 150 nanometer divided by 300 nanometer, क्या चलेगा 15 1s are 15 2s are, that is under root of your e2 divided by e1, ठीक है ना। कितना आ रहा लिख लीजिए, कितना होगा बेटा, रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ द फोटोन, फोटोन डायरेक्टली एनर्जी दे रखा है तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ इसको, इतना पूरा कैलकुलेशन क्यों जा रहा हूँ। एनर्जी का फॉर्मूला बताइए, E is equals to h into nu लिख सकता हूँ, that is equals to hc by lambda।
and energy is inversely proportional to lambda. And E1 by your E2 will be equal to lambda 2 divided by lambda 1. Lambda 2 is how much for me? 300 nanometer divided by 150 nanometer. So A2 में चले गए. So E1 will be equal to 2 times of your E2. Second option. Sure. The kinetic energy of an electron gets tripled when de Broglie wavelength associated with it changes by a factor of how much? Okay. De Broglie wavelength lambda is equals to your h by p. P को हम लोग एनर्जी में लिख रहे हैं तो h divided by under root of your 2m into your kinetic energy. So wavelength is inversely proportional to your under root of your kinetic energy. Clear? The kinetic energy of electron gets tripled. Yani lambda 1 divided by lambda 2 is equals to under root of your kinetic energy 2 divided by kinetic energy 1. Kinetic energy of electron gets tripled. Yani this will become 3 times of E1 divided by E1. E1 gets cancelled. The de Broglie wavelength associated with it changes by a factor. And lambda 1 will be equal to root 3 times of lambda 2. And lambda 2 will be equal to lambda 1 divided by root 3. 1 by root 3 times आ जाएगा. Third option. Next one. One electron, one proton is accelerated by equal potential. Ratio of their de Broglie wavelengths will be equal to your how much? I hope everyone can do this relation beta. Potentials में लिखना है lambda is equals to h divided by under root of your 2m into kinetic energy. Kinetic energy is stopping potential into your charge. यानी wavelength is inversely proportional to your root of your m. Accelerated by equal potentials बोला है ना बेटा, तो potential same रहेगा. Charge of that particle one electron के लिए बोला है right now. So it is right now for this relation lambda 1 divided by lambda 2 is equals to under root of your m2 divided by your m1. One electron and one proton, यानी wavelength of electron divided by wavelength of proton will be equal to under root of your mass of your proton divided by mass of your electron. आ जाएगा सर. So which will be the answer? Third option. Who discovered the charge on an electron for the first time? I hope everyone knows this one. Millikan, Thomson, Kelvin and Coulomb. ये दोनों तो नहीं होंगे, एक तो थॉमसन हो सकता है, मिलिकन हो सकता है. So Millikan charge experiment हम लोगों ने पढ़ा होगा right now, आपने केमिस्ट्री में भी कहीं देखा होगा. Millikan was the first to discover the charge on the electron. J.J. Thomson discovered the electrons right now. लेकिन discovered कौन किया for the electron for the first time? Millikan. Thomson से पूरे मॉडल से बाद में जो एक्सपेरिमेंटल भी दिया गया हुआ था. ठीक है ना? Next one. When the speed of the electron increases, then the value of its specific charge. अब ये थोड़ा important question है, ये देख लीजिए जरा. When the speed of the electron increases, the value of specific charge. Specific charge मतलब क्या बेटा? किसको याद है? Specific charge मतलब क्या? E by m का ratio. So the speed of your electrons increases, तो ratio क्या होगा? कोई बताएगा? चेंज, वही कैसे चेंज होगा? रिमेन्स अनचेंज बोल रहे हैं ना, पिज्जा नहीं होता. विद द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, देन द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? स्पेसिफिक चार्ज मतलब Q by m. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे लिखोगे बेटा? इलेक्ट्रॉन और फोटोन जब भी कोई भी लिखोगे कोई पार्टिकल के लिए, मास ऑफ that one will be equal to m naught divided by under root of 1 minus v square divided by c square. अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, इस ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना बेटा इसमें से. अगर ये वैल्यू घट रहा है तो मास इंक्रीज होगा. तो अगर इसमें मास इंक्रीज हुआ तो ये देखो Q by m में अगर मास इंक्रीज हुआ, then the speed of that one will be decreasing. ठीक है ना? अगर मास इंक्रीज हुआ तो स्पीड विल बी डिक्रीजिंग. वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड क्वेश्चन. देखो इस टर्म में मैंने क्या किया? 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर में वी स्क्वायर बढ़ रहा है. अगर वी स्क्वायर बढ़ रहा है मतलब ओवरऑल ये जो टर्म है ना, ये वाला टर्म डिक्रीज होगा, ये वाला टर्म डिक्रीज हो रहा तो मास इंक्रीज होगा. अब यू नो दैट व्हेनेवर द मास ऑफ एनी पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, ऑब्वियसली द स्पीड ऑफ दैट वन विल बी डिक्रीजिंग. चलिए, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द de Broglie wavelength of proton and as well as of your alpha particle? जल्दी बताइए. lambda is equals to your h divided by under root of your 2m into your kinetic energy. Kinetic energy same है तो wavelength is inversely proportional to mass लिख लीजिए. यानी wavelength of proton divided by wavelength of alpha particle is equals to under root of mass of alpha particle divided by mass of your proton.
and that will be equal to mass of the alpha particle is how much? 4 times the mass of proton divided by mass of proton. √4 will be equal to your 2. So that will be the answer for me, 2:1. The frequency and intensity of a light source are doubled. Consider the following statement. Saturation photocurrent remains almost the same. Maximum kinetic energy of the photoelectron is doubled. क्या होगा आंसर, कोई बताएगा? गुड क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर फिर फंस जाते हैं बच्चे. 4:1 कहते हैं बेटा. 4:1 कैसा आ गया? √4 है ना बेटा, तो 2:1 आ जाएगा. ऐसे गलती मत करो बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आप लोग करना. ऐसे ही आता क्वेश्चन पेपर कल के दिन, एकदम बड़े वाले लेंथी वाले नहीं आते. बेसिक्स में ही आपने को आना चाहिए बेसिकली. चलो देखो, the frequency and intensity of the light source have been doubled. Consider the following statement. Saturation photocurrent remains almost the same. Maximum kinetic energy of the photoelectrons are doubled. Both 1 and 2 are true. 1 is true but 2 is false. 1 is false but 2 is true. Both 1 and 2 are false for me. क्या होगा बेटा? Frequency and intensity of light source are doubled. फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स आर डबल, यानी फोटो करंट भी डबल हो जाएगा, इंटेंसिटी भी डबल हो जाएगी इनिशियल से. यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाउ मच फॉर मी बेटा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. इट विल बी 2 times ऑफ योर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ना बेटा. Saturation photocurrent remains almost the same. Maximum kinetic energy of photoelectrons is doubled. Saturation of photocurrent remains almost the same. नहीं बेटा, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो तो बोथ ऑफ देम विल बी चेंजिंग. अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स मैंने डबल किया तो फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन द डबल कंडीशन. 3 टाइम भी करा तो वैसे ही हो जाएगा बेसिकली. ठीक है ना. सो बोथ 1 and 2 आर फॉल्स फॉर दिस. हेलो, ठीक है बेटा. इंटेंसिटी अगर डबल कर रहे हो तो सैचुरेशन करंट भी डबल हो जाएगा ना बेटा. अगर इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रहा तो ये चेंज नहीं होता. अगर इंटेंसिटी डबल हो रहा है तो सैचुरेशन करंट भी डबल होगा, ना फोटो करंट भी डबल होगा. isn't it? So first one is right now for me false. अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन मैंने डबल किया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर देन दैट वन ना. तो इनिशियल ऑलरेडी रहता है, उससे भी डबल हो जाएगा. सो बोथ 1 and 2 विल बी फॉल्स फॉर दिस वन. ठीक है चलो. Light of energy 2 electron volt falls on a metal of work function 1.4 electron volt. The stopping potential is how much? Hope so everyone might have been done. कितना है बेटा? Energy work function stopping potential पूछ रहा है. Energy is equals to work function plus stopping potential and E into V naught. And E into V naught will be equal to 2.0 minus 1.4 and this will be equal to 0.6 electron volt. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन चले गया तो पोटेंशियल विल बी इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी 0.6 times of volt. नेक्स्ट वन, प्रोटॉन्स आर बीन एक्सिलरेटेड थ्रू. ये क्या है बेटा? ये प्रोटॉन है. A proton has accelerated through a potential V has a de Broglie wavelength lambda. Then the de Broglie wavelength of alpha particle when accelerated through the same potential will be equal to your how much?
proton accelerated to same potential, यानी we need to write the de Broglie wavelength in terms of potential, यानी lambda is equals to h divided by under root of your 2m into your stopping potential into charge, यानी wavelength is inversely proportional to under root of mass and in terms of your charge. So wavelength of your proton and that of your alpha particle must be equal to under root of your mass of your alpha particle divided by mass of proton into charge of your alpha particle divided by charge of your proton. Charge of alpha particle कितना होता है बेटा? Charge of alpha particle is 2 times the charge of your proton या charge of electron, and mass of your alpha particle will be equal to 4 times the mass of your proton. ये भी proton ही लिख लो नहीं तो बस, ठीक है ना? तो ये चले जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो this will be under root of your 4 times of mass of proton divided by mass of proton into this will be charge of alpha particle is 2 times the mass of proton, charge of your proton divided by charge of proton. Proton, mass of mass will get cancelled. That will be equal to root 8, or 2 is 8. That will be equal to 2 root 2. ठीक है ना? So what is asking for me? An accelerated, then the de Broglie wavelength of alpha particle will be equal to your how much? तो alpha particle निकाल लीजिए. तो यहाँ पर तो अपने को आ गया ना बेटा, lambda alpha will be equal to, यानी wavelength of alpha particle will be equal to wavelength of proton divided by 2 root 2. This will be the answer. So third option. Chalo. In the following diagram, if V2 is greater than V1, V2 is greater than V1, then what is the relation for this one? तो यहाँ पर देखो बेटा, V2 is greater than of your V1 दे रखा है, लेकिन stopping potential किसका more है बेटा? इसका stopping potential is more, isn't it? So wavelength of lambda 2 का stopping potential is right now for me the more right now, isn't it? तो क्या हो जाएगा बताइए? Metal तो same है, no doubt. Stopping potential is more for your more negative, isn't it? So kinetic energy of the electron will be increasing. So energy will increase हो रही, energy increase हो रही, the wavelength will be decreasing. पता है ना बेटा? V2 is greater than V1 बोला है, यानी kinetic energy of that electron is right now for me what? Kinetic energy is increasing. और kinetic energy increase हो रही है तो initial energy is also increasing. अगर energy increase हो रही है, E is equal to C by lambda, so wavelength decrease हो जाएगी. अगर wavelength decrease हो रही है तो lambda 1 will be lesser than lambda 2. So fourth option will be the answer. Next one. In an experiment of photoelectric effect, the frequency f of incident light is plotted against the stopping potential V0. Work function of the photoelectric surface is given by your how much? ये directly slope का formula है, अगर आप लोग को याद होगा तो नहीं. Basically, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो दे रखा, that is nothing but of your volt into E. याद है किसी को? Stopping potential tan theta will be equal to your h by your E. Work function of the metal surface will be equal to your how much for me? Fourth option. Slope of the line AB. AB कहाँ है बेटा? Work function of the metal surface नहीं होता ना बेटा, work function थोड़ी देगा AB. देखो work function energy is equals to this is right now for me work function plus electron volt energy, यानी EV naught will be equal to this will be energy minus of work function. यानी potential versus frequency का formula लिखा है, it is E is equals to h into nu divided by E minus h into nu naught divided by your E. ये हो गया y is equals to your, this one is right now for me your frequency is along your x-axis, isn't it? This will be equal to your m into x minus of your c. Okay, तो ये पूरा तो constant दे रहा है basically. This is your work function. h by E is right now for me what? Some constant tan theta. Is it? On your m we are having right now for me this one. So h by E is right now for me the slope m. Okay, ये पूरा constant हो जाएगा, ये पूरा constant हो जाएगा. Slope will be equal to tan theta. So work function is equals to this much. Work function is equals to h into nu naught divided by E. ठीक है ना? हाँ, ये पूरा work function हो जाएगा ना. So work function of this one will be equal to how much for me? E into
पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन वोल्ट into your OB O2B, ये एनर्जी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलो, if an electron and photon propagate in the form of waves having the same wavelength, it implies that they have the same energy, momentum, velocity, and angular momentum. Obviously, they have the same momentum because energy is equal to hc by your lambda. HRC the constant रहेंगे, तो energy is inversely proportional to the wavelength. So momentum will always remains for me the constant right now for that one. ठीक है, चलो। The ratio of de Broglie wavelength of molecules of hydrogen atom, ये भी हो जा रहा बेटा 10 मिनट में, of hydrogen helium which are at temperature 27 and 127. ये मालूम है आप लोग को, kinetic energy theory का फॉर्मूला है। Kinetic energy of theory will be equal to 3/2 times of your Boltzmann's constant into T for the molecules. So lambda is equals to your h by under root of your 2m into your kinetic energy of the molecules, and that will be equal to your h divided by under root of your 2 into m into, this is 3/2 into your Boltzmann's constant into absolute temperature. A2 और A2 चले गया, so de Broglie wavelength will be equal to your h divided by your under root of your 3m Boltzmann's constant into absolute temperature, isn't it? तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ wavelength is right now inversely proportional to your under root of your mass into absolute temperature. तो इसका लिख लीजिए, wavelength of your, एक तो हो गया हाइड्रोजन और एक हो गया हीलियम, that will be equal to under root of your mass of your helium divided by mass of your hydrogen into inversely proportional to temperature है, so temperature of helium divided by temperature of hydrogen, ठीक है ना। So उसने क्या बोला, the ratio of the de Broglie wavelength of your hydrogen and as well as of your helium, helium का कितना होता है बेटा 2 times, isn't it? So this is mass of your this one is right now for me 2 times, यानी ये हो जाएगा मेरे को 1/2 into this one is 400 divided by your 300. तो ये वाला और ये वाला चलेगा 2 1s, this is 2 2s, 3 2s 6. कितना आ रहा है बेटा? mass of helium है ना, sorry, helium is nothing but 4 times. helium मतलब अल्फा पार्टिकल ना बेटा, so it is 4 times the mass of your hydrogen divided by mass of your hydrogen into helium का है कितना, हाइड्रोजन के लिए 27 है, 120 127 प्लस दिस 273, देयर इज 400 डिवाइडेड बाय 300, ये वाला चलेगा, ये मास चलेगा, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 4 is 16, 16 डिवाइडेड बाय 3, 16 डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन H2 दे रखा ना, A2 हो जाएगा into 2 हो जाएगा, and that is under root of your 16 divided by 6. कितना आ रहा देखो, थर्ड ऑप्शन, या अंडर रूट ऑफ योर 8/3. चलो, which one is right now correct for me, चलो बताइए जल्दी से, which one is correct? E square is equals to P square C square, E square is equals to P square into C, E square is equals to P into C square, E square is equals to P square by C square. एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है अपने को, m into your C square, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, E is equals to m into C into your C, this will be P into C, so energy will be equal to P into C, इसको स्क्वायर कर लो, so it will be P square C square, ऐसे लिख सकता हूँ मैं बेसिकली, so obviously first option will be correct. Next one, a photon of energy 3.4 electron volt is incident on a metal having a work function 2 electron volt. The maximum kinetic energy of the photoelectrons is equals to your how much for me? Maximum kinetic energy निकालो basically, Einstein's photoelectric equation में से, that is energy of your photon minus work function. Energy of photon कितना दे रखा है 3.4 minus of your 2, that will be equal to 1.4 electron volt. तो stopping potential कितनी होगा, E into V naught will be equal to 1.4 times E into V, तो E और E चले गया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया मेरे पास 1.4 वोल्ट, that will be the answer. And which of the following is dependent on intensity of incident radiation in the photoelectric experiment? Which of the following is dependent on your intensity of incident radiation in photoelectric effect? First one, work function of the surface, it is a property of metal बेटा, ये तो डिपेंड नहीं करेगा. Then amount of photoelectric current, obviously ये डिपेंड करेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी चेंज करोगे वैसा वैसा photoelectric current भी चेंज करेगा.
stopping potential will be reduced. ये भी नहीं होगा. Maximum kinetic energy of the photoelectrons is not depending upon intensity, but that depends upon the frequency. The only option is right now for me second one. Next one. Davison and Gramer experiment proved. कोई बता सकता है इसका? Wave nature of light, particle nature of light, both A and B, neither A or near B particulation. कोई बताएगा? This is wave nature of your matter, not light. Okay. What is the answer, beta? Particle nature of light मतलब energy of photon. Davison and Gramer experiment नहीं होता बेटा. Wave nature of the matter was being proved by the Davison and Gramer. Particle nature is being given by what? Newton's corpuscular theory, Huygens principle वगैरह दे रखा है basically. Wave nature is being given by your Davison and Gramer experiment. याद रख लीजिए. Next one. ये देखिए बेटा. If light of wavelength lambda1 is allowed to fall on a metal, then kinetic energy of photoelectrons emitted is E1. If wavelength of light changes to lambda2, then kinetic energy of electron changes to E2. Then work function of the metal is how much? देखो ये मेरे पास एक metal है और एक metal है ऐसा कुछ. If light of wavelength कितना बेटा lambda1 incident हुआ, then kinetic energy of the electron emitted is E1. उसके बाद wavelength change हुई for the lambda2, तो energy हुई right now for me E2. Then work function of the metal will be equal to how much? अगर मैं इसकी equation लिख रहा हूँ HC divided by lambda1 will be equal to your, or I can say in terms of work function अगर मैं इसको लिखूं तो minus of your HC by your lambda1 minus of work function will be equal to energy E1. उसी तरह से इसके लिए HC by your lambda2 will be equal to minus of work function will be equal to your E2 from Einstein's photoelectric equation, isn't it? तो यहाँ से मैं HC by lambda1 के लिख सकता हूँ HC by lambda1 will be equal to your energy E1 plus work function. उसी तरह से HC by your lambda2 will be equal to your E2 plus of your work function W0. ठीक है ना? तो मैं इसमें से यहाँ पर E2 की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं बेसिकली HC by lambda1 ये हो गया इसमें से HC by lambda2 E2. तो HC by lambda2 is equals to E2 plus lambda0. तो ये दोनों इक्वेशन सेपरेट हो गए. तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बेटा? HC is equals to this is E1 plus of work function into lambda1 लिख सकता हूँ मैं इसका HC की वैल्यू. तो ये लिखा के यहाँ पर डाल दो इस पर. तो यहाँ पर डाल दूँ तो E1 plus of your work function into lambda1 divided by your lambda2 is equals to your E2 plus of your work function. यानी अगर मुझे वर्क फंक्शन निकालना है तो वर्क फंक्शन विल बी इक्वल टू योर E1 प्लस वर्क फंक्शन into your lambda1 divided by lambda2 minus ये हो जाएगा E2. ठीक है ना? तो कुछ आंसर दे रखा है क्या उसमें? then work function of the metal. Okay, और भी निकालना है इसको तो और मतलब सिंप्लीफाई करना है. तो W0 into lambda2 will be equal to E1 into lambda1 plus W0 into lambda1 minus E2. तो all the W0 work function एक जगह ले लीजिए. यानी this will become for me work function will be common into ये बन जाएगा lambda2 minus of lambda1. So that will be equal to your E1 lambda1 minus E2 into your lambda2. E2 into lambda2 क्योंकि यहाँ पर मैंने इधर लेके गया तो इससे ऊपर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. तो ये हो जाएगा lambda2. तो वर्क फंक्शन विल बी इक्वल टू E1 lambda1 minus E2 lambda2 divided by work function. Sorry, this will be lambda2 minus lambda1. अच्छा वाला क्वेश्चन था थोड़ा लास्ट वाला. ये वाला this will be the answer. E1 lambda1 minus E2 lambda2 divided by lambda2 minus lambda1. थर्ड ऑप्शन आ गया सर. चलिए अब यहाँ से एटम्स का है बेटा. ये वाला हम लोग थोड़ा एटम्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के फॉर्मुलेस कल करा के कल मैं एटम्स पे प्रॉब्लम्स करा लूंगा. तो विल बी वर्क इट आउट. फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लॉजिक गेट्स वगैरह खत्म कर लेंगे.
तो और एक 2 बार हम खत्म कर सकते हैं बेसिकली, और एक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद फिर ग्रैंड टेस्ट कर लेंगे। 1 2 3 दिन तो हम लोग नाइट आउट करके 3 4 ग्रैंड टेस्ट भी करेंगे। सो 50 + 50 + 50 200 400 क्वेश्चंस विल ट्राई टू डू ऑन योर PYQs। बकरीद के बाद विल ट्राई टू सिट ऑन सैटरडे संडे, सैटरडे वेडनेसडे वगैरह तक 2 3 दिन हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। स्कोरिंग टॉपिक से करते हैं बेटा, जितना हो सका उतना रिवाइज करते रहो, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। संडे के दिन तो कल क्या है, टुडे इज राइट नाउ सैटरडे, कल तो ईद है ना बेटा, तो मुझे जरा गांव जाना होगा, तो आई नीड टू गो टू माय